Here comes the news of the week. Recently, NDDB has joined hands with Sanchi in Madhya Pradesh. Listen to Shri Shankar Chaudhary from Banas Dairy, making comparisons of Banas, Sanchi with Indian and global dairy matrices and suggesting the way forward for dairy development. वहाँ पर हुआ है। ये जो स्लाइड है वो देखने जैसा है। थोड़ा कंपैरिजन मैंने दिया है। ये कंपैरिजन में आप देख पाएंगे कि पूरा नेशन का, वर्ल्ड का, इंडिया का, मध्य प्रदेश और बनास डेयरी। तो मध्य प्रदेश में काफी पोटेंशियलिटी है। 1.8 मिलियन मैट्रिक टन की कैपेसिटी, आप तो बिल्कुल समझ सकते इतनी कैपेसिटी आपकी है। तो बनास का जो है वो मैंने जो बनाया 83 लाख एक डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्शन, इतनी कैपेसिटी है। टोटल कैपेसिटी हमारी 1 करोड़ है, लेकिन बनास डेयरी के पास में जो आ रहा है 83% हमारी पास में आ रहा है। दूसरा खाने में और ये उपयोग है। केटल पॉपुलेशन जो है वो भी आप देखेंगे तो 4 करोड़ कैटल वो मध्य प्रदेश के है, हमारी पास में 30 लाख है। एक पर कैटल प्रोडक्टिविटी एक फिगर जरा हम देखेंगे तो हम अपनी जो टोटल मध्य प्रदेश की हमारा प्रोडक्शन है वो ज्यादा कर सकते हैं। इंटरनेशनल जो हमारा एवरेज है वो 6.7 है, इंडिया का 3.5 है, हमारा 2.8 है। और बनास ने जो इम्प्रूव किया वो इनके कारण 4.8 लीटर पर कैटल प्रोडक्टिविटी हमारी हो पाई है। उनमें हमारा एआई, हमारा अपना काम एआई का या तो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी, इस सब का हमने बहुत बड़ी मात्रा में काम किया। 1800 से ज्यादा हमारी पास में एआई कर्मचारी है। तो इनके कारण हर एक गांव में बीजदान का जो गर्भदान है, कृत्रिम गर्भदान का काम, वो वहां पर हो रहा है, उनका ट्रेन। और हमारी पास में 250 से ज्यादा वेटनरी डॉक्टर है हमारे अपने डेयरी के खुद के। तो इनके कारण भी काफी ये काम हो पाया। एक ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में कितना हमारा शेयर है, तो हमारा 96% है वहां पर। मध्य प्रदेश में हमें और करना है। ये अभी सांची ने और एनडीडीबी ने मिलकर ये बहुत बड़ा काम किया है। ये मैं मानता हूं कि इतना बड़ा काम हो जाएगा, एनडीडीबी दोनों काम कर सकती है। एक तो कल दूध का वैल्यूएडिशन करने का काम तो करेगी, लेकिन ब्रीडिंग का काम में भी बहुत अच्छा, तो पर कैटल प्रोडक्टिविटी भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। मैं मानता हूं कि जिस ढंग से एनडीडीबी के साथ में मिलकर सांची ने ये काम किया है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और भारत सरकार ने दोनों ने, ये बहुत बड़ा बदलाव आएगा आने वाले सिर्फ 10 साल आप देखेंगे तो आज की जो कैपेसिटी, आज के फिगर है 2 गुना से ज्यादा बढ़ जाएंगे बिल्कुल 5 साल में, और आने वाले समय में और भी बढ़ सकता है। Analogues in dairy markets have become a big nuisance. So public comments are invited and we must submit our suggestion within 2 months to FSSAI latest by 7 June 2025. The authorities seek feedback on 5 key points related to analogues. First, nomenclature. Suggest appropriate terms like non-dairy or analog for products substituting milk components. Second, labeling. When analog is used as an ingredient, its nature and detailed composition must be clearly declared. Third, declaration in HoReCa. Restaurants and caterers must mention if dairy analog is used instead of real dairy. For example, analog of paneer in dishes, ensuring consumer awareness. Fourth, loose sales ban. Dairy analog must be sold only in sealed packs above 500 grams with full labeling, not in loose form. And fifth, FSSAI registration restriction. Petty food businesses will not be allowed to manufacture dairy analogues. Only state or central licensed entities will be permitted to ensure stricter compliance. Let's work together and do our duty. FSSAI has issued a strict warning to major online grocery and food delivery platforms, including Blinkit, Zomato, Swiggy, Big Basket, Zapto, and Amazon, over non-compliance with expiry date regulations. The authority flagged concerns after finding that several products listed on these platforms either lack proper expiry date labels or displayed incomplete information, a clear violation of the FSS Labeling and Display Regulations 2020. FSSAI has warned quick commerce and e-commerce platforms like Zomato, Blinkit, and Amazon to comply with expiry date rules, ensuring food items have at least 45 days shelf life before delivery. This enforcement drive follows
routine inspections and rising consumer complaints about misleading or missing product expiry information, particularly on perishable categories like dairy, packaged food, and ready-to-eat items. Following 60% excess pre-monsoon rains and an above-normal monsoon forecast, Karnataka's milk inflow could peak at 1.2 crore litres per day by July-August, up from the usual 85 to 92 lakh litres. Bengaluru's Bambul expects to cross 18.5 lakh litres per day. While fodder and water have improved, surplus milk previously forced KMF to convert to SMP at Rs 240 a kg against a market rate of 120 a kg, causing heavy losses. A repeat could force unions to cut procurement or farmer payouts. Sector leaders urge raising the milk incentive from Rs 5 to 7 per litre and expanding exports and value-added products. The key industry insight remains as, without swift market interventions, Karnataka's dairy sector risks significant financial stress for cooperatives and farmers alike during the peak season. Before the White House 90 days pause on higher tariffs for other countries expires on July 9th, India is one country rushing to negotiate a trade deal with the US. India, the world's largest milk producer, presents major opportunities for global dairy exporters, driven by its rising middle class and growing appetite for whey, lactose, and value-added dairy. However, strict tariffs, self-sufficiency targets, and strong cultural preference for fresh, local dairy products create tough barriers. USDEC notes that while demand for specialized imports is growing, traditional dairy imports remain politically sensitive. Trade success will hinge on forging strong partnerships and adapting to India's regulatory, pricing, and consumer dynamics. Meanwhile, India is also expanding domestic production to reduce future import reliance. The key industry insight remains as India's dairy trade landscape offers scale but demands strategic patience and deep local alignment for sustained success. Biotech firm Perfect Day is facing a lawsuit from Organic Consumers Association and Toxin Free USA for allegedly misrepresenting its pro-farm whey protein as non-GMO and identical to dairy whey. Though the product received FDA GRAS status in 2020, tests by HRI found 86.6% fungal proteins, far above the company's declared 6.7%. These residual proteins derived from genetically engineered Trichoderma ricci raise concern about allergenicity and health impacts. The suit, seeking marketing restrictions, not damages, challenges its non-GMO claim as US law permits the label if final products lack genetic material. The industry insight is the first legal challenge to precision fermented whey highlights regulatory gray zones. Startups must prioritize transparency, robust safety data, and credible consumer communication. ओके स्टूडेंट्स, जो के बारे में सीखा, अब आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ब्रेक लो, किटकैट खाओ, न जाने अगला पल क्या ले आए। किटकैट ब्रेक बनता है।